मरकुरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। अब मार्स के बाद सन, वीनस, मरकुरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। अब मार्स के बाद सन, सभी को नमस्कार। कल हमने होरा शास्त्र के अनुसार जो होरा शास्त्र के अनुसार 24 hours specific sequence for the planets as the that becomes the reason for
finalizing the weekdays. Weekdays. It means prior to this, how the world was, how the world was considering the days of week. But when we get the knowledge of Hora, that is Ahoratra, and the Saturn is the farthest, the Saturn is the far away from Earth. It's far away from Earth. And as such, the first day was to be considered as the Saturday. Or otherwise, if we take in adverse, if we take this as the adverse, that is, now we are starting now this. This here. Okay. Now please see, this is 16th December 2025 at 20 hours 41 p.m. IST. Okay. Previously, we were finalizing the lucky number, as the prime number. Yesterday, we have learned that our lucky number is the prime number. Second from the lucky number, it's the
Marak number. 12th number from 12th number from ascendant shows Vayasthan. In unique Sukshma Astronumerology, we have only 1 to 0. We have only 1 to 0 means 10 digits. That is 10 numbers. So, lucky number is 2. In astronumerology, for finding the Vayasthan, we have to deduct 1 digit from the lucky number. Remember this thing forever. Okay. Suppose this is the lucky. This is the egg number. Lucky number is this. Ascendant means lucky number. Okay. It means if this is the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, first number is itself. First number is itself. There will be no problem. Up. Second number from ascendant, that is the Mesh Lagna. If you are having the Mesh Lagna, then your lucky number is 1. Your lucky number is 1. And first of all, we have to only consider only this 3 numbers. First of all, we have to complete this. Okay. That is, please here, ascendant, ascendant. This is the 1 to 0. This will come here as the lucky number. Okay. Then we have to consider the second cusp. We have to consider the second cusp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and 1. Lucky plus 1. This is the Marak. Okay. Now, Vayasthan. How to calculate Vayasthan? Lucky number minus 1. Lucky number minus 1. Okay. 1 minus 1. How it is?
1 minus 1 is equal to 0, sir. 0. 0. That is the prior 1, 2 we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the 10 जो है वो हम ब्रैकेट में डालेंगे, 0 लेंगे. अब then we write the same sequence in continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and again 0. Now please see here, this is your lucky number. This is your lucky number. And prior to this, if we consider the lagna, that is the ek number, one number, then what is the last but one? Hello? This is the last number before 1. That is 1 minus 1 is equal to 0. Okay. 2 minus 1 is equal to 8. 3 minus 1 is equal to 2. 4 minus 1 is equal to 3. 5 minus 1 is equal to 4. 6 minus 1 is equal to 5. 7 minus 1 is equal to 6. 8 minus 1 is equal to 7. 9 minus 1 is equal to 8. 0 minus 1 is equal to 9. Okay, 0 minus 1. If we consider this, again, we repeat. We will, for the betterment of this, we will repeat the same. Then you will come to know. Zero. Again, the sequence. 0 afterwards 1 comes. 2, 3, 4. This is the sequence, continuous process. This is the continuous process. This is the continuous process. Continuous. It will not stop. It will never stop. It will never stop. Okay. Now, the first rule. Lucky number is the only number that makes you to get what you deserve, what you want, and what the universe will help you. How? How the universe will help you. Lucky number is the only number that makes you to get what you deserve, what you want, and how the universe will help you. As in astrology, second bhava from any cusp is the marak bhava sthan for the cusp under consideration, that is lucky number. If we take
1 is the lucky number. Then second cusp from 1 is 2. So 2 is the Marak number for 1. Digit lucky number 1. Okay. As in astrology, 12th bhava from any cusp is the Vayasthan, that is the totally detrimental results of the cusp under consideration, that is lucky number. If we take 2 is the lucky number, then the Vayasthan is the number prior to lucky number, and it can be easily calculated by the formula, that is lucky number minus 1. If we take second is the lucky number, then 2 minus 1 is equal to 1 is the Vayasthan for lucky number 2. Remember this thing, remember this thing forever. Okay. Yesterday I have given you certain basics that when you help to the universe, definitely help will also, universe will help you also. Universe also will help you. Okay. If you wish to get from the universe, you have to walk as in line with the universe. Something which is very, you deserve everything. You want everything. But if you reach there by some delayed time, will you get this? Suppose you got the question paper well in advance, and you are the luckiest man of the world, and you woke up and write down the answers of the paper, questions, and in this process you
went to sleep and woke up at 12 hours, 12 p.m. IST. And the paper was scheduled to start with 10 a.m. sharp. You get the question paper well in advance. You are the luckiest. Then whatever when you get, you are anyhow. We cannot say that question paper has been leaked and all other things. But somehow you get the paper, or somehow you have been, you felt that the same questions will be asked for this exam, and you only study, you only write down the answers of the questions and commit it to your memory. And in the very joyful position that I am having everything, I will be the first, etc. And after committing to your memory, you went to sleep and you are dreaming that I am the only person who knows the answers. And in this process, in the very joyful process, that particular person was left and he woke wake up at 12 p.m. IST. Another presumptions we are taking that particular person, that particular student was in college hostel, and in the college hostel, all the friends were not giving the importance to that fellow. They were ignoring him, and as such, he got an opportunity to know the questions, paper questions in all. He studied, he prepared himself to face the examination with the best answers. But by his bad luck, he was sleeping till 12 p.m. in the morning, afternoon. And the paper was scheduled to start with 10 a.m. sharp. Forget that person would have been come in the first, but he has been deprived from appearing for the examination, because when he reached to the college or the examination hall, the examination was fully, totally ended. Paper timing was totally lapsed. Suppose we face some daily routine in municipal areas. The administration, that is the municipal corporation or the Nagar Panchayat, supply
the water to everyone. Water supply timing are the strict one. As per the stringency of water, if the water supply person opens the cork from the main by 5 o'clock and correct 6 o'clock, that the cork will be closed down. In your watch, the time was 4 hours 35 minutes, and actually the real time was 4 minutes and 4.50 minutes. Okay. When the person was engaged in very urgent matter and he assumed that till 6 o'clock there will be the water supply, and within no time I will have the sufficient water. When he completed his urgent task and watched and saw that time was 5 hours and 45 minutes. 45 minutes. His watch was showing that the timing of 5 hours 45 minutes. But and he easily went to the water cock. Then he found that water supply was closed down. Why? His watch was 15 minutes behind the world's watch. World means the government agency watch, and thus he had been deprived from getting the water, and it was the very essential thing to have the water in sufficient quantity. Everybody want, because not only for drinking, but for bathing, for sanitation, water is to be in full quantity. But when
These type of incidences we see that happens in everyday's life, everyone's life, once or the other, once or the other. The same can be happened that you are planning to go by the public events and the bus or the train has been the timetable, as the timetable of train or bus, the bus will start, will come by 5:45 a.m. and your watch is 20 minutes behind. Means your watch shows 5 hours 25 minutes and real time is 5 hours 45 minutes. You completed your personal task very slowly as you took it to your mind that I am having the sufficient time. I am having the sufficient time to reach to the bus stop, a railway station, and all other things. But when he reached at the bus station, the bus or the train was already gone, and the time which the bus stand or the railway station clock was showing that the time was 6 hours and 5 minutes. We see such an incidences in everyday life. It may be happened to you, it may be happened to your colleagues, it may be happened to your family members and all other things. How and why this is happening? How and why this is happening? This is the crux of the unique Sukshma Dasha Astronumerology. In this position, we are to consider that now we have completed that there may be only your lucky numbers will be only from the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. But how it is to be calculated? How it is to be calculated? We will see this. Lucky number is to be calculated according to the date of birth of the Jataka. Date of birth contains the date, that is 1 to 31, months that is 1 to 12, and year, that is 2020 to 2030, or whatever it may be. Suppose 2000, 2002, 2100, 21,000. Okay. The basic rule of the mathematics is that if you add
some numbers in left side, then the same number should be also added in right side also. Right side also. My date of birth is 5 January 1967. Date is from 1 to 31. That is 5th. Month is from January to December. That is 1 to 12. That is 1. Years is from 1900 to 2000. That is 1967. 1967. Okay. If we add my date of birth digits, we get the figure, that is 0 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7 is equal to 1 5 plus 1 6 6 plus 1 10 6 plus 7 7 plus 9 16 16 plus 6 22 and 22 plus 7 is equal to 29. Again, it is considered as 2 plus 9 is equal to 11. Again, 1 plus 1 is equal to 2. This is the calculation we see nowadays in general numerology. General numerology. The date, the month, and the year will be called according to other systems with different names. With different names. And they have lucky number, प्रारब्ध नंबर, ये नंबर वो नंबर, इस तरह से there are so many numbers. They are having so many numbers. They will be derived from this number only. If you take date of birth, that is the date. If you take month, if you take year, then if you take 3 of all, then the number will be different. And what you get the addition of that numbers, again, there are the Sun for 1 and Mars for 9. This is the value of planets digits. This is the value of planets digits. Remember one thing, in real practice, everyone has only one mother and one father. There may be more than one mother and more than one father also in
special community or religions. But in general, one is the last. One is the last. Okay. Now see, in unique Sukshma Dasha Astronumerology system, we strictly follow the mathematics rule, that is nothing to add to the date of birth, month of birth, and year of birth. What it means? Please tell anyone any date of birth, any date of birth. It may be connected to you or generally what you imagine. Please tell me one date of birth. It should be more than 11. Month should be October, November, December. And year, whatever you feel. Please give me the 3 digits. That is the date, month, and year. Please give me. बोलिए. सुनीता मैडम. कोई भी डेट बताइए. किसके, आपके बच्चे के, लड़के की भी बताइए, आपकी बताइए, आपके पति की बताइए, किसी का भी बताइए, या फिर इमेजिनरी बता दीजिए. बट द डेट शुड बी more than 10. Month should be only 10, 11 and 12. And year whatever you feel. बताइए. सर 3 मई 1968. मैंने आपको क्या बताया? जी सर. Date should not be less than 10. मैंने आपको ये बताया कि हाँ बोलिए. Sir, I'll tell. हाँ, yes. 14 December 1970. 14. 1990. नहीं, ये क्या 1/4. 1/4. Yeah, हाँ. December. December 1990. 90. Okay. I have explained this previously also. Date calculation. Dates. We are having the dates that is 1 to 9 in 3 categories. 1 to 9, 10 to 19, and 20 to 29, and 30 and 31. 30 and 31. The reported time, reported birth date, it's 14th. Okay. In this date, या फिर we will add this. In this 1, in this 2, in this 3 is common.
it's common. अब मुझे बताइए, इन dates 10 to 19, one is common, and the reported time or reported date of birth is 14. Means we are taking only in the date, that is 14. One is common in all the 10 digits, that is 10 to 19. And so we take only 4 in the date, that is 14th. Okay. Now, month of the birth, that is December, October, November, December, 12, 10, 11, 12. In these 3 months, one is common. Okay, so we take 12 December, 12, that is December, as only 2. Year of the birth, that is 90, 1992. 1999, 199 is common. So we take 1990 is equal to only 0. Only 0. As such, date, 4, month, 2, and year, 0 is equal to 6. Means if we take date of birth 14/12/1990, the lucky number is 4 plus 2 plus 0 is equal to 6. 4 plus 2 plus 0 is equal to 6. Now, what are the Marak and Vayasthana for lucky number 6? तो मारक स्थान कौन सा आएगा? लकी नंबर 6 के लिए मारक स्थान कौन सा आएगा? 7 sir, 7 आएगा. Lucky number 6 is having Marak Sthan, that is 7. And Vayasthan 5. will be 6 plus minus.
अब बताइए, लकी नंबर 6 and व्ययस्थान 5. लकी नंबर 6 and व्ययस्थान 5. उसी तरह से आप ये जो व्ययस्थान जो है और मारक स्थान जो है, उसके तिथि के अनुसार उसकी इमेज कौन सी रहेगी? हेलो, तिथि के अनुसार उसकी इमेज कौन सी रहेगी? हेलो, मैंने क्या पूछा आपको? सर आपका स्क्रीन विजिबल ही नहीं है। 2 सेकंड नहीं, ये मैं मेरा क्या बोलते हैं उसको, 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड दो। ओके, मैंने आपको क्या, हेलो, 2 सेकंड। लकी नंबर 6 मारक बाबा 7, मारक बाबा 7, व्ययस्थान 5. I told you to create the image of the Marak Bhava at Vyasthana. How it is to be taken? How it is to be taken? बताइए। इमेज कैसे करें, बताएगी, तैयार करेंगे? हेलो, So 1722716. हाँ, 2 सेकंड। मैं अभी क्या, मैंने क्या बोला? सिर्फ आई व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू, वी वांट द इमेज ऑफ 7 and we want the image of 5. Image means +5. हेलो, इमेज मीन्स +5, ध्यान में लीजिए, इमेज मीन्स +5. सो मारक भावा is 7 and image bhava
it's 7 plus 5 is equal to 12, means 2. Hello. Seventh Marak Bhava is 7 and image Bhava is 7 plus 5 is equal to 12. It means 2. Now, Vyasthan 5, image of Vyasthan 5, it's 5 plus 5 is equal to 10 is equal to 0. Is equal to 0. It means we have now one. We have now lucky number 6. Secondly, Marak Bhava 5, Vyasthan मारक भावा नहीं मारक भावा 7, व्ययस्थान 5. यहाँ image of मारक भावा is 2 and image of व्ययस्थान is 0. Image of मारक स्थान is 7. मारक भावा is 5th and image of Marak Bhava is 7. It is image. That is image ka matlab, image means plus 5. That's why I have reminded you the rule of Tithis. 8, 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 7, 2, 8, 2, 7, correct. 3, 8, 13, 4, 9, 14, and 5, 10, 15, that is 30 Amosya. So if your Tithi, lucky number is, which number is? What is the lucky number? 6. What is the lucky number? 6, sir. 6. 6. Then image क्या हो जाएगा? What would be the image? Please see here. 6 plus 1. 6 plus 1 क्या आ जाएगा? 7. 7. Sorry, 6 plus 5. Sorry. Image is equal to plus 5. 1 आ जाएगा सर. 11. 1 आ जाएगा. ओके. तो हमारे पास क्या हो गया? ये निगेटिव हाउसेस, ये जो निगेटिव हाउसेस है वो हमारे पास 4 आ गए. निगेटिव हाउसेस जो है वो हमारे पास 4 आ गए. ओके. और पॉजिटिव हाउसेस जो है वो 2 आ गए. लकी नंबर 1 है और उसका इमेज जो है वो उसका फ्रेंडली नंबर है. ये फ्रेंडली नंबर है. फ्रेंडली नंबर है. ध्यान में लीजिए. अब जरा ऊपर जाते हैं. फिर उपचय स्थान उपचय स्थान
उपचय स्थान का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव हाउसेस। ओके, सेकंड cusp is Marak. Second cusp is Marak. Third cusp is multiplier. Third cusp is multiplier. Third cusp is multiplier. ध्यान में लीजिए। अब ए कौन जाएगा? ये ए बन जाएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर दैट इज गुणिले मल्टीप्लायर। अब 1+3 यानी कि तीसरा नंबर आना चाहिए। 3 नंबर का कॉलम कैसे बनेगा? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? मल्टीप्लायर कैसे बनेगा? हेलो, मल्टीप्लायर कैसे बनेगा? मल्टीप्लायर कैसे बनेगा? थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर। हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड? सिंपल, लकी नंबर digit +2, lucky number digit +2. Please see, lucky number is x +2. ये हो गया x एंड +2। 1+2 कितना होता है? 1+2 इज इक्वल टू Third. 3। 2+3 इज इक्वल टू Fifth. 5. 2+2 is equal to 4. 3+2 is equal to 5. 4+2 is equal to 6. Okay. Then 5+2 is equal to 7. 6+2 is equal to 8. 7+ is equal to 9. 8+2 is equal to 0. 10 यानी कि 0. 9+2 is equal to 1, 11. और 0+2 is equal to 2. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लायर इसमें आ जाएगा। ओके, ए हो गया। वी हैव द लकी नंबर मारक भावा। 2 सेकंड। ओके, इसके बाद एक उसको फॉर्मूला करते हैं। ओके, ए करते हैं बेस नंबर, ए करते हैं इमेज नंबर, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। तो पहला मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर यानी कि x
+2, x+2। ओके, अब 6 के लकी नंबर 6 है, तो 6 का मल्टीप्लायर कौन बनेगा? हेलो, 6 का मल्टीप्लायर कौन बनेगा? 8 8 बनेगा सर, 8। 6 + 2 = 8। क्यों बनेगा? क्योंकि दूसरा जो है वो +1 वाला जो है मारक भावा होता है, +1 यानी कि मारक भावा, x + 1 = मारक भावा। ओके ओके ओके, अब देखिए ये हो गया। अब मल्टीप्लायर गया। अब मल्टीप्लायर की इमेज +5 13। ए, मल्टीप्लायर पहला कौन सा आ गया? हेलो, 8 ये इसका 8 मल्टीप्लायर आ गया। 8 ये 6 का मल्टीप्लायर क्या आ गया? 8 आ गया सर। 8 आ गया। तो ये इसका 6 का इमेज कौन सी है? 1 है। यस। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3। 3। अब इसका भी आप +5 करके भी इमेज कर सकते हैं। हेलो, हाँ, यस सर। ये जो है इसमें +5 किया तो 1 आ गया। तो ये जो मल्टीप्लायर जो आता है, मल्टीप्लायर को 8 को ये भी हो सकता है। अब ये देखिए, 8 + 5 = 13 = 3 आ गया। समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखिए ये 7 का इमेज ये हो गया, इसका इमेज हो गया। अब हमारे पास क्या क्या रह गया? एक लकी नंबर, मारक, मारक के बाद उसका मारक इमेज। ओके, व्ययस्थान, व्ययस्थान इमेज। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? लकी मल्टी नंबर मल्टीप्लायर एंड लकी नंबर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इमेज, कौन है सुनो? मल्टीप्लायर इमेज। हेलो, सूरज नहीं हो पा रहा यार, वो 3 4 बार करके देख लो। मल्टीप्लायर इमेज। अब यहां देखिए, ए बन गया 1, ए बन गया 2, कौन है ये? ए बन गया 3। ओके, ये ये क्या व्ययस्थान कौन सा है? ये 0 0। ध्यान में लीजिए, व्ययस्थान की इमेज क्या होगा? वो 5। मल्टीप्लायर कौन बनेगा? 3। 3 की इमेज क्या बनेगा? 8 बनेगा। अब 1 2 3 5 0 0 3 1 2 3 0 5 8 0 5 8। अब 2 का मारक, 2 जो है मारक स्थान का है, मारक स्थान का इमेज, मारक स्थान की इमेज 7 है। ओके, मारक स्थान की इमेज 7 है। 1 नंबर का हम लोग एक विचार करते हैं, तो 1 नंबर का व्यय स्थान 0 आता है, उसकी इमेज आती है 5। 1 नंबर का मल्टीप्लायर आता है 3, और 3 का मल्टीप्लायर होता है सॉरी 3 का सॉरी 3 का मल्टीप्लायर होता है इमेज, मल्टीप्लायर नहीं, 3 का इमेज जो होता है 8 होता है। तो इस तरह से वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 7।
हाँ, और इसकी इमेज भी करना चाहिए ना, लकी नंबर इमेज। ये 8, ये 2 नंबर आ गया, ये 3 नंबर आ गया, ये नंबर भी है, नंबर है यानी कि सीक्वेंस 4, ये हो गया 5, एक हो गया 6, एक हो गया 7 और ये रह गया 8। हमारे पास इस तरह से 8 नंबर आ गए। वी हैव 10 डिजिट्स, 10 digits. We have now one lucky number, one friendly number, one lucky number, one friendly number, one lucky number, one multiplier. Okay, lucky number image, multiplier image. They are the 4. They will consider as the friendly. Okay, then मारक, एक मारक, उसके बाद मारक मल्टीप्लायर, मारक मल्टीप्लायर, उसके बाद व्ययस्थान, व्ययस्थान मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 फ्रेंडली हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 4, टोटल मिल गया। ये अशुभ है यानी कि ये बैड। अब न्यूट्रल, न्यूट्रल, अब न्यूट्रल कौन रहेगा? हेलो, न्यूट्रल कौन होगा? न्यूट्रल इज इक्वल टू लकी नंबर प्लस 3, लकी नंबर इज प्लस 3। अब लकी नंबर 1 प्लस 3 कौन सा आएगा? 4। हेलो, लकी नंबर 3 का कौन सा आएगा? 4 आएगा। ये जो 4 आ गया ये न्यूट्रल आएगा, ये न्यूट्रल आएगा। उसका भी मल्टीप्लायर करिए, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 4 + 5 is equal to 9, and finally we get lucky number। मैं वो ये करता हूं, कॉलम करता हूं, लकी नंबर, लकी इमेज, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इमेज। ओके, उसके बाद मारक, मारक इमेज, व्ययस्थान, व्ययस्थान इमेज, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल इमेज। ओके, फॉर्मूला मैं यहां आपके सामने देखता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लकी इमेज ए x + 5 मल्टीप्लायर x + 2, मल्टीप्लायर इमेज क्या हो जाएगा? क्या ये जो मल्टीप्लायर है इसका मल्टीप्लाई इमेज करने का है। मारक x + 1, इसके बाद +5,
व्ययस्थान x-1 +5, न्यूट्रल लकी नंबर +3 and image +5. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यानी कि 0। अब एक का इमेज क्या हो जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब लग्न का मल्टीप्लायर कौन होगा? 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 और 2। ओके, अब 3 का मल्टीप्लायर क्या होगा? 8 9 10 11 12 13 14 15 6 and 7। ओके, अब मारक क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। उसका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, अब लग्न से -1 करेंगे, क्या करें, क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 0 का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब न्यूट्रल कौन हो जाएगा? 1 में 3 ऐड करो, 1 + 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1। उसका मल्टीप्लायर करें, 4 का मल्टीप्लायर 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये कैलकुलेशन टेबल आपके सामने अगर होता है तो किसी भी नंबर का, ये मैंने आपको फॉर्मूला बना दिया। एक ऐसा होता है मल्टीप्लायर इमेज x + 2 + 5। ओके, x + 1 + 5, ये इधर भी आएगा x + 1 + 5, x - 1 x - 1 + 5। इसमें l प्लस, अब l +3 + 5। अब कोई भी आप मुझे तारीख बताइए, कोई भी तारीख बताइए, कोई भी तारीख। अब वो 1 से 21 तक तारीख, कोई भी महीना, कोई भी साल बताइए। Sir, 21st February 1983. 21 February 1983. 1983। Okay, now see 1 + 2 + 3 = 6। ये किसकी तारीख है? हेलो, हाँ जी सर। ये तारीख किसकी है? सर ऐसे एक फ्रेंड की है सर। ओके, आज पहली तारीख किसने दी बताई थी? अभी पहली तारीख किसने बताई थी? सर मैंने बताई थी। बराबर है ना? हेलो, हाँ जी, या उसका लकी नंबर क्या आया था? 6 उसका नंबर आया था 6। इसका भी नंबर क्या आ गया? 6। आज तारीख कौन सी है? हेलो, आज है 16। 16। हाँ, क्या आ 16 गया? करेक्ट 6। है।
ये मेरी जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो दुनिया में ऐसा धमाका करती है ना कि आप इसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे ना तो यू विल बी टोटली एस्टोनिश्ड। आपके करेक्ट पास सर। आने वाले, हेलो, आपके पास आने वाले आपके जो ऑफिस के जो जो आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, वो ये आपके ये जो पहले जो 4 लेवल है ना, ये दे आर द वेरी लकी, दे आर द एडवर्स, दे आर द एडवर्स। आणि न्यूट्रल है तो कुछ न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल, कई बार आपको लगता है कि वो आपको मदद करेगा लेकिन कोई मदद नहीं करता है। इसलिए ये आर इक्वल टू निगेटिव। हाँ, एक कॉलम में करता हूं, 2 सेकंड। ऑस्पिशियस, नॉन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, नॉन ऑस्पिशियस, अशुभ। एंड ये जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ये होता है न्यूट्रल। ओके, अब 6 नंबर आ गया, इसका लकी नंबर क्या आ गया? 6 नंबर आ गया। तो उसके लकी नंबर कौन से हो जाएंगे? 183। करेक्ट, 183। और उसके निगेटिव नंबर्स क्या कौन हो जाएंगे? 7 7250। 7250। हेलो, हाँ जी। और न्यूट्रल कौन हो जाएगा? 94। 94। आप कोई भी किसी का भी लीजिए, किसी का भी। ये पहले लाइन में मैं फॉर्मूला सारे के सारे भर के देता हूं, यानी कि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 1 + 1 = 2, बराबर है। 1 + 1 + 5 = 7। ओके, 1 - 1 is 0। ओके ओके, अब 1 - 1 + 5। ओके, ये हो गया। 1 + 3 + 5। 1 + 3 + 5। ओके, यहां 1 + 5, यहां 1 + 2 = 3। ये रिपीट, 1 + 2 + 5 = 8। ये हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है। ये बन गया रेडी रेकनर। मैंने ये फॉर्मूला 1998 में बनाया था। तो 2 सेकंड। ओके, ये थोड़ा देर के लिए मैं बंद करता हूं। मैं दूसरा एक मेरा जो फॉर्मेट है उसको आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, विजयानंद रत्नाकर पटेल, नक्षत्र सम्राट, मोबाइल नंबर, ये बहुत पुरानी है वो।
ये मोबाइल मैंने 2003 में लिए थे। अब ओम श्रीमद उच्चिष्ट महागणाधिपते नमो नमः, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम सोम जटा शंकराय नमः। ओके, तो अब एक मित्र की जन्म तारीख है 21 अगस्त 1973। 21 अगस्त 1973। अब 21 में से 1 लिया, अगस्त में से 8 लिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 12, दैट इज 12, एंड लकी नंबर इज 1। ओके, अब इसको क्या करना है, हमने जो फॉर्मूला बताया आपको, 2 + 3 प्लस 1 + 3 + 2 + 3, सॉरी, 2 3 2। आपका लकी नंबर कौन सा है? हेलो, इस कुंडली में लकी नंबर कौन है? सर 2 है, 2। 2 है, तो 2 में 2 डाल दीजिए, कितना होता है? 4 4 में 3 डाल दीजिए, 7 7 में 2 डाल दीजिए, 9। 9। ये जो मैंने आपको जो बताया था उसमें आता है कि नहीं वो? हाँ जी सर, आया। अब ये क्या करना है, इसके क्या करने का है, ये जो है ना उसमें से 1 घटाने का। हेलो, ओके, सब में से 1 घटाना। -1 यस। डायरेक्ट, ज्यादा कट कट करने का नहीं। यस सर। ओके, और ये क्या हो गया, ये लकी नंबर +3 +5। ओके, दो में कितने, 3 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 और 5 में 5 ऐड, 5 में 5 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? 0। 0 आ गया। ओके, अब आप कोई भी, किसी भी नंबर, किसी भी व्यक्ति का एक लकी नंबर मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति का लकी नंबर, आप कोई भी आपके मन में सर, जो आता है, 1 2 9। 9। ओके, ये 9 डाल दीजिए। तो 9 में 2 ऐड कर दिया, कितना आया? 1 उसमें फिर 3 ऐड कर दिया, कितना आया? 4 उसमें सिर्फ 2 ऐड कर दिया, कितना आया? 6 6। 9 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 8 0 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 9 एक में से 0 घटा दिया, एक में से 1 घटा दिया, 0 आ गया। 0। 4 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 5। 3 और आ 6 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 5 5 आ गया, बराबर है। अब 2 में 3 ऐड कर दीजिए, 5 सॉरी 9 में 3 ऐड कर दीजिए, 9 में 3 ऐड करना है सर, 12 आएगा फिर तो। 2 आ तो गया ये सर। न्यूट्रल आएगा ना, ये पहला। हेलो, हाँ जी, न्यूट्रल हो गया, ठीक ये जो है, ये पहले इधर के उधर के जो है वो न्यूट्रल है, ये ना ओके। इधर के है ना उधर के है। हेलो, है। 2 and 7 न्यूट्रल, ओके, बराबर है ना? ठीक है 2 सर। का इमेज कौन सा होता है? 7 7 होता है। ओके, अब और कोई भी डाल दीजिए नंबर। 8 8, 8 को देखिए, 8 में 2 डाल दीजिए, 10 आ गया, 0 आ गया, ठीक है सर।